the first section on this is I've been called. Okay. यहाँ पे कुछ words है and you have to tick the words that people have used for you. Oh, loud, no. Bold, oh yes, at times. Sarcastic, yes, my friends call me sarcastic. All the time. Okay. All the time. Talkative, now case to case, depends. If you find your people. My people. हाँ. And also if I find good company in interviews, I'm very talkative. अच्छा. Yeah. So what ठीक do है. I do? Well, you can let it be. Okay. हाँ. I'm a girl's girl. Yes. Definitely. Dramatic. No, I don't think I'm dramatic. Sensitive. When it's something जिससे मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ, मेरी फैमिली की बात है, मेरी फ्रेंड्स की बात है, और उनमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिनके वजह से मैं सेंसिटिव हो सकती हूँ, बट मोस्टली नहीं. व्हाट डू यू थिंक? आई एम सेंसिटिव. That's what other people think about Okay. you. Bossy. I don't know, Jannat. I don't think you are. I think Komal should answer that for us. No, you are. I don't Bossy. I'm not bossy. I think bossy is a little stronger know. Yeah. version of saying that I know how to You get know my what you work want. done. Yeah. But Correct. it's not like bossy. थोड़ा Absolutely. उसका नीचे. No, this word, there's a reason also why this word is also there. Exactly how you said, right? Like women who know how to get their work done are sometimes termed कि यार ये तो बहुत bossy है. Oh, then I have to tick it. Yeah. Too much. Have you been called too much? No. No? Glad. No. Nice. But you know, I think I'm too much. But when it comes to my work and how to handle situations, I'm going to take it. Okay. Yeah. We all should be too much. Yeah. And people can go find less if they find us too much. Absolutely. Go girl. Rebel. I'm Rebel. not a rebel. Honestly, मेरी life में I've been lucky enough to never face that situation जहाँ पर मुझे rebel करने का ज़रूरत पड़ता. Yeah. Yeah. Opinion है 100%. Yeah. Brave. Yes. What's the bravest thing you've done? मुझे बताओ. Since you ticked brave. What's the bravest thing? I think जिस profession में मैं हूँ और जितनी चीज़ें मैं कर रही हूँ, I think all of those things I would mark as brave. क्योंकि no matter what, आप जो भी करें, you do face a lot of backlash. And especially on social media, you can never be perfect for anybody, okay? But especially on social media, आप कुछ भी कर लो, आपको 4 गाली तो पड़नी है. हाँ. ठीक है? तो ये चीज़ें जो है मैं बचपन से फेस करती हुई आ रही हूँ. And it's been 17 years now. And I'm still going strong. And it doesn't affect me. Yeah. Okay? Not anymore. And I think that's the bravest thing. I kept on going. Absolutely, absolutely. You know, public opinion के वजह से sometimes people drop out. You know, 100%. people step back. But if you didn't let that affect your path, then of course it's a brave one. Other section on this is feedback and remarks. Now basically this is about your report card in school. Oh. ठीक है, तो tell me a remark that was. किस तरह के remarks report card पर स्कूल में हुआ करते थे? यार मेरे बहुत कम रिमार्क्स मिले मुझे क्योंकि मैं अच्छी बच्ची थी यार, मतलब मैं कुछ शैतानी वगैरह नहीं करती. I was a good girl. I was a good girl. But you know one remark that I used to get. Okay. तो हमारी जो पीटी यूनिफॉर्म होती है उसमें आपको ब्लैक नहीं आप शूज पहन सकते, आपको व्हाइट कैनवस पहनना, करेक्ट? मैं हमेशा ब्लैक पहन के चली जाती थी. And I was in the yellow house. अच्छा. I don't know why. I used to always wear black and go. No, I mean purposely you used to do it कि याद ही नहीं रहता था. अब मुझे इतना नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब भी मैं जाती थी असेंबली में खड़ी होती थी ना, I used to be like oh shit. And the other one was I used to not cut my nails. Okay. Yeah. So I think ये 2 चीजों के लिए मुझे रिमार्क मिला है. तो मुझे अब ये बताओ कि what is the remark that you wished for? Like something that was never written for you and you wished कि यार आप या मेरे nails पर मेरे जूतों पर पड़े हो, ये क्यों नहीं लिखा कभी? मुझे कभी भी ज़्यादा मिस्चीवियस होने के वजह से या नॉटी होने की वजह से या किसी से लड़ाई करने की वजह से या ऐसी कोई चीज़ की वजह से कभी रिमार्क नहीं मिला. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक बिकॉज देयर वाज दिस वन बॉय इन माय स्कूल जिसको हर रोज रिमार्क मिलता था एंड ही वाज फेमस इन द एंटायर स्कूल
बिकॉज हमेशा वो सिर्फ कॉरिडोर में कोई टीचर उसको स्टाफ रूम लेके जा रहे हैं, कोई यहाँ लेके जा रहे हैं, कोई वहाँ लेके जा रहे हैं, एंड ही यूज्ड टू गिव zero damn about it. तो मैं हमेशा ये सोचती थी that how is it to be like that? Because I have always been on the other side. I have always been that person जो हर टीचर की फेवरेट है, जो हमेशा टाइम टेबल से अपना बैग रख कर लाती है, जो हमेशा अपना सब कुछ टाइम पर फिनिश करती है, इवन दो मैं शूट्स और स्कूल साथ में मैनेज करती थी, बट तब भी मैं सब काम अपना करती थी, सारा काम. तो कभी टीचर्स को मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी दैट ये इनकम्प्लीट है, ये करो, इससे नोट्स लो, ये तुमने किया नहीं, क्यों नहीं किया. तो मैं हमेशा ये जरूर सोचती थी दैट व्हाट इज इट लाइक to be on the other side. Yeah, to be a baddie. To be a baddie. I think that is something that I kind of missed in my school. I agree with you. Like I in my get teenage you. also. Yeah, same bro, same. Yeah. Teacher's pet, teacher's favorite. Yeah, but you know, I think वो ना हमारे दिमाग में रह जाता है. When I think अगर मैं ये काम नहीं भी कर रही होती बचपन से, तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता था that I'm their favorite. Yeah. और वो हमेशा किसी को देख के ये बोलते थे that look at जन्नत, उसने किया ना ये. So to be that good girl ना, आपको अपना वो इमेज खराब करने में भी तो डर लगता है. जैसे मैं चीटिंग नहीं करती थी कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं चीटिंग करूंगी, सब टीचर्स मुझे जानते हैं और उनको हमेशा लगता है कि शी इज द नाइसेस्ट. और वो दूसरों को बोलते हैं, दूसरे बच्चों को बोलते हैं कि जन्नत ने किया, व्हाई कुडंट यू डू इट, एंड लुक एट हर, ये वो. तो मुझे हमेशा लगता था अगर मैं कभी चीटिंग करते हुए पकड़ी गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. सो आई थिंक मैं इमेज कॉन्शियस थी बिफोर इट वाज इवन अ थिंग. सो इवन इन माय स्कूल. So you were actually being the good girl without anybody asking you to be. Yes. Yeah, because I liked it. Yeah. Back then I liked it. Now when you think about it, now you feel like okay, I could have had a little fun. Some days, like a little fun wouldn't have harmed anybody. Is what I'm trying to say. बहुत child actors हमने देखे हैं, you know, who have eventually done some work, but then they have found their other path maybe. Yeah. You have continued to do this. You, like literally people have seen you grow from screen to screen, right? So एक तो ये भी perception होता है क्योंकि लोगों ने, audience ने आपको बचपन से देखा, तो ऐसा भी होता है यार इसको तो हम जानते हैं. You felt that because you started acting at such a young age, you had to be mature. Like, was maturity expected out of you? So I'll answer the first question first. That a lot of child actors, they are now doing something else, and I continued and sticked to this. I feel like I always wanted to do this. I was very sure in my head. My parents were very sure. And which is why I said that this is the bravest thing that I've done, because over a period of time you realize that staying relevant is very difficult. It is so difficult, and yet to manage something like that. And by this I don't mean that I'm the most relevant person ever to exist on planet, but it has been a journey of its own. और जब आपके माइंड में कोई चीज सेट हो जाती है ना, and I am a believer of manifestation. I manifest, and how I have manifested all of this, and there is more to come, and I know it will happen for me. तो जो maturity की बात है, it was not needed, and I was not asked to be mature. The situation made me like that. And again, it is not just because of the work. क्योंकि मैंने और भी बच्चों के साथ काम किया है. जब मैं फुलवा करती थी, काशी करती थी, मेरे भाई बहन बनते थे, मेरे दोस्त बनते थे, सब मेरी एज के होते थे. बट येट कोई मेरे जैसा नहीं था. तो मेरी मैच्योरिटी को तो हमेशा बहुत नेगेटिवली लिया गया है लाइफ में. Okay. People used to come to my dad and they used to be like, she's losing on her childhood. She's become too mature. This is not how a child behaves. This is not how you talk. This is not how you present. A child should be presenting herself, which I just never understood at that point of time. Just because I know how to give interviews, just because I know how to present myself in front of people. You know how to speak your mind. Just because I know what I want in life. Yeah. Just because I know that, okay, maybe I can improve because I just did not get selected for that particular ad or the project. Just because I know who I am and what I want in life, you cannot take that negatively. Absolutely. Just because you think I'm way too young for it, I think that was a big up for me. But people never took it in that sense. Oh. Okay. They often spoke to my dad regarding this as a drawback, that she should behave like a child. And my dad was like,
why do you care about how she should be behaving? She's exactly behaving how she's feeling, and that is what matters, no? Hmm. How nice of your dad to take a stand for you like that. Yeah. And I've always seen him doing that. So like big ups to your dad for just being around. I think yeah. So what happens is that आपको पता है, and you are somehow prepared that the world will constantly judge you, always judge you. आप चाहे कुछ भी कर लो. But when you have that sense of security कि यार मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली तो एटलीस्ट दे विल नेवर स्टॉप टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, आई थिंक दैट इज अ बिग बिग रिलीफ, इजंट इट? लाइक यू Of फील course. लाइक भाड़ में जाए दुनिया यार. आपकी आधी से ज्यादा वरीज तो वहीं खत्म हो जाती हैं. Because who am I answerable to? Am I answerable to any faceless people? करेक्ट. Am I answerable to anybody जिसको पता ही नहीं, जिसने मेरी जर्नी नहीं देखी, जो मुझे जानते नहीं, ना मैं उनको जानती हूँ? I'm not answerable to anybody. I am only answerable to my parents in this entire world. Yeah. Time and again you've spoken about the support from your parents, and मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत important होता है, because उसके बिना चाहे पूरी दुनिया support ना करे, लेकिन if you know that you have your parents support, and especially for you because I'm sure they used to take you for auditions, you've spoken about how your father, he wanted to become an actor and he somehow saw that dream through you. But मुझे ये भी लगता है कि जब पेरेंट्स इतने होल हार्टेडली अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और दे लेट देयर किड्स हैव व्हाट परहैप्स प्रोबेबली व्हाट दे डिडंट हैव, वो अपनी खुद की एक कंडीशनिंग साइकिल को ब्रेक कर रहे होते हैं. You think your mother, your father, they broke their own cycle of conditioning, like things that probably they weren't allowed to do or they weren't allowed to have, but they were like कि नहीं यार, हमारे बच्चे के पास तो ये, हमारी बच्ची को तो ये मिलना चाहिए. Absolutely. And I think intentionally or unintentionally they do that every day, every week. क्योंकि as children we often don't realize that it's their also first time becoming parents and raising children. They learn things. कई बार हम नाराज होते हैं, या कई बार जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड और रेज्ड, और आई डिडंट आस्क फॉर दिस एंड आस्क्ड फॉर दैट, बट दे जस्ट डूइंग देयर बेस्ट. तो मम्मी डैडी ने मुझे कभी भी ये कंडीशनिंग नहीं दी कि बी अ गुड गर्ल, दैट मीन्स बी एकदम ओबीडियंट, लिसन टू व्हाट एवरीबडी सेज, सबकी हाँ में हाँ मिलाओ और स्टे क्वाइट. उन्होंने मुझे कभी ये गुड गर्ल कंडीशनिंग दी ही नहीं. The definition of good girl is not that. The definition of a good girl जो मुझे उन्होंने सिखाया is be a good human, be respectful, stand for yourself, be empathetic, and have values and have strong boundaries and be kind. That is what a good girl means. Yeah. Being naive, just because किसी ने बोला then आपको हाँ बोलना है क्योंकि बड़े हैं, अब बोल दिया तो क्या कर सकते हैं, that's not being a good girl. Yeah. You can be a good girl even when you have strong boundaries. It's just that you're harder to mess with. Absolutely. We are trying to change the definition of good girl. Absolutely. And you rightly put that across, Jannat. But yeah, your mom, like, do you think उनको कभी कहा गया था कि, या उनसे कभी expectation थी while she was growing up, उनसे कभी expectation थी to be a good girl? Are there any things, her own conditioning that she has broken for you? मेरी मम्मी घर की सबसे बड़ी है और मैं भी मेरे घर की सबसे बड़ी हूँ. ओहो, elder sibling. हाँ, तो मेरी मम्मी तो हमेशा इतनी पैम्पर्ड रही हैं, हमेशा. मुझे याद है कि मम्मी मुझे हमेशा एक किस्सा बताती हैं कि उनके कोई ट्यूशन के कोई सर थे, उन्होंने ना कोई पनिशमेंट मम्मा को दिया था. अच्छा. And mama cried, and that was it for my nana. Like, how can she cry? Like, how did you make her cry? And then she tells me that उन्होंने उसे निकाल दिया, फिर उसको डांटा, that ये तुम नहीं कर सकते, मेरे घर में नहीं कर सकते, मेरे बच्चों को नहीं डांट सकते. नाज़नीन रोई कैसे. So I just feel very happy and very grateful कि मुझे जो चीज़ें और कंडीशनिंग मिली है वो तो मुझे तो मिली ही है. और हम आज के टाइम पर ये बोलते हैं, जब हम इतना इवॉल्व कर रहे हैं एज पीपल, इतनी सारी नई चीज़ें हम देख रहे हैं, इतना एजुकेशन लोगों को मिल रहा है कि गर्ल चाइल्ड को कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं ट्रीट करना है. उस टाइम पे मेरी मम्मी को इतनी अच्छी कंडीशनिंग मिली है, इतनी अच्छी लाइफ मिली. आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई रियली हैव सो मच
ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. वरना कहीं ना कहीं आपको होता है ना कि यार मुझे तो ये लाइफ मिल रही है बट मम्मा को नहीं मिली. Right, right. उन्होंने मुझे दी, दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, बट उन्होंने कभी नहीं जिया ऐसा. बट मेरे केस में टचवुड ऐसा नहीं है. It's so amazing. Yeah, and I think that's amazing. Yeah, it's absolutely. It is. Yeah, because उस time पर to raise a girl like that, you know, to encourage her to have a voice of her own, that is why she could probably raise you like that. Now I get it. Now you get it. Now I get it. It's been in my family. It's been in the... Yeah, it's amazing. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.